You're right, Zia. The best thing to have at Bundu Khan is the chicken tikka and the sikh kebab. The mutton sikh kebab. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम पे और हम आए हैं यहां बुंदू खान के कबाब और बारबेक्यू खाने के लिए। लेकिन मैं यहां अकेला नहीं आया हूं, बल्कि मेरे साथ आई है टीआरटी की टीम और उनके होस्ट, उनके प्रोग्राम होस्ट अशफाक करीम, जो कि बड़ा ज़बरदस्त शो करते हैं ईटिंग इस्तंबुल के नाम से। और मैं तो ट्राई कर चुका हूँ बुंदू खान के कबाब, लेकिन देखते हैं कि अशफाक करीम हमारे साथ जो है वो कैसे करेंगे। हाउ आर यू? वेलकम टू कराची। I am very good. Thank you so much, Ben. How is it going? Fantastic city. Yeah. Fantastic city. We arrived 2 days ago. Yesterday you took us to Burns Road. Amazing. Electric. Wild. Yeah. Amazing food. Beautiful. You are going to see some very delicious food on his show and on his channel TRT World. I hope you will enjoy your stay. Oh, I am definitely going to enjoy my stay. So far, it's one of the best days I've had. It's only been 36 hours since I've been in Karachi, but it's amazing. Thank you so much. So ये बड़ा ज़बरदस्त कोलैब है। इंशाल्लाह you can see some more interesting videos on TRT World. लेकिन फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपना शो और थोड़ा बिहाइंड द सीन टाइप की वीडियो होगी ये। देखते हैं कि अशफाक को बुंदू खान के कबाब कैसे लगते हैं। चलें? Thank you, Gurkhan. Can you hold with your two hands? Two hands? And make it like, yeah. Am I in his way? Like this is. Yeah, that's it. Gurkhan, how are you? Fine, I'm fine. Good. Can you hear me? Gurkhan is from Turkey. Yeah. Hi guys. मकसूद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र हो। आप माशाल्लाह TRT की टीम भी आ गई है आपको कवर करने के लिए। कैसा लग रहा है? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत भी काफ़ी की है और वैसे भी आप लोगों का बड़ा ताउन होता है तो मज़ा अच्छा लगता है बहुत। इसकी वजह यही है कि अभी भी आज भी देसी मुर्गी के टिक्के बेच रहे हैं। फार्म की मुर्गी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर कोशिश ये है कि हम देसी इस्तेमाल करें। माशाल्लाह मसाले आज भी आपको वही मिलेंगे जो आपने कभी खाए हो बचपन में। और माशाल्लाह चौथी जनरेशन चल रही है अब, मगर मसाले हमारे आज भी वही, रेसिपी हमारी वही है। And tonight we're at the famous Bundu Khan barbecue at this square over here. Sorry, I forgot the name of the square. It's Singh Muslim Square. अस्सलाम वालेकुम। Get this. Get him saying this. Get him saying this. He's telling us what he I wants. will use my light. Just a Okay. minute, okay? He's getting his light. Then you do that. Thank you very much. So we're actually going to have 6 types of kebab or 6 types of food tonight. And Maqsood's going to tell us what they are in addition. Inshallah, this is a chicken roti. This is a fry roti. Yeah. And anyway, fresh. That's like doesn't his hands burn? He's just taking this meat off. And this is the mutton shish kebab, huh? Yeah, Wow. भाई ये जो मटन कबाब है ना, इन कबाबों की बात ही अलग है। ये सीख कबाब है। यहाँ पे ये जो भाई हैं हमारे वो उसको शीश कबाब कह रहे हैं, क्योंकि तुर्की में जो है ना वो शीश कबाब होते हैं। लेकिन ये मैं इनको बता दूँगा कि दिस इज़ नॉट शीश कबाब, दिस इज़ सीख कबाब। और इनका जो टेस्ट है ना, अमेजिंग। मकसूद भाई ने जस्ट ऑफ द ग्रिल आपके हाथ इनको टेस्ट करने के लिए दिए, इनको भी टेस्ट करने के लिए दिए। अमेजिंग, ज़बरदस्त। हाउ वाज द मटन कबाब? The mutton kebab was better than I expected. I was surprised. Not because, I mean, obviously I would assume that it's going to be delicious, but it looked plain. Yeah. It looked very plain. It looked like it's just meat, you know? And you eat it, and it's got this lovely, smoky, subtle, human salt. And this is not the shish kebab, this is seekh kebab. Seekh kebab, yeah. Thanks for correcting me. Yeah, Seekh yeah. kebab. I'm spending too much time in Turkey, quite clearly. Full deathmatch. Yes, sir. Thank you so much. Thank you, brother. That's good. The only dessert they sell, and it's it costs about just $1/3.
and it's what they've been selling and what they're famous for the last 50 years. The Bundu Khan halwa. You come here and you have your meal, it's semolina, suji halwa, and it gets the orange coloring from coloring that they use. भाई मेरी जो स्ट्रीट फूड वीडियोस बनाने का मकसद है ना, वो एक तरह से मुझे आज पूरा होता हुआ नज़र आया है, क्योंकि तुर्की का एक बड़ा मीडिया नेटवर्क है TRT वर्ल्ड, और मेरी वीडियोस देख के तुर्की से कोई यहाँ पे आए एक बड़े नेटवर्क से, मीडिया नेटवर्क से, और यहाँ पे वो हमारे कबाबों की, हमारे स्ट्रीट फूड की वीडियोस बनाए, और मैं उनको ये गाइडेंस दूँ, यहाँ पे हेल्प आउट करूँ, और अपने मुल्क का नाम रोशन करने में अपना छोटा सा किरदार अदा कर सकूँ। तो मेरे ख़्याल में इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। Now we are at the we're going to make the famous Bundu Khan brown karai. They have the brown karai and the white karai. The brown karai includes tomatoes and the white karai does not. You just wash the chicken briefly, discard the water, and it's cooking in this very hot oil. And immediately you can start smelling that garlic coming through. This is real skill, man. अच्छा, आज की वीडियो में जो है ना, आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी सी कम सुनने को मिलेंगी। उसकी वजह ये है कि ये हमारे जो मेहमान हैं तुर्की से आए हुए, ये वीडियो बना रहे हैं। मैं इनकी वीडियो में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा हूँ, और इन्हीं की वीडियो को जो बिहाइंड द सीन्स हैं उसके तरह से शॉर्ट्स ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि जो वीडियोस बनती हैं वो किस तरह से बनती हैं, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। This is what it's like behind the scenes. You see, the cameraman does most of the work. I just sit around here, be nice, look at the food, get hungry, build up an appetite, get ready to, you know, attack. I'm actually speechless. This is so good. And I haven't eaten all the chicken tikka in the world, so I can't say this is the best chicken tikka in the world. I can tell you that this is the best, You know? one of the best. But I can say that I agree with you. I can't say it as a definitive, absolute statement. One of the best. But this is really, really good. Yeah. I mean, the flavors are all the way into the bones. Zia, by the way, has been kind enough again to join us. He's the person who got us connected with Maqsood. And we are very lucky because Maqsood usually he runs the branch of Bundu Khan in Dubai. Yeah. So he's been here for the last 2 weeks, and by chance we managed to get him. But Zia is the connect, you know. And this is why you need to follow Zia and his, you know, let's get him to 700,000 subscribers. Subscribe Street Food PK. Before I leave Karachi, let's get him to 700,000 subscribers. Thank you so much. मकसूद भाई, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त, माशाल्लाह आपने हमारी मेहमान नवाजी की, खास तौर पे तुर्की से मेहमान जो आए हुए हैं। आप हमारे भाइयों और हमेशा भाइयों की तरह पेश आए। तो खाना तो सभी खाते हैं, मगर कोई प्यार से खिलाए, दिल से खिलाए, मोहब्बत से खिलाए, उसमें और चाहत बढ़ जाती है, खाने में मज़ा आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने गरम गरम खाया, मुझे अच्छा लगा। पाकिस्तानीज़ आर फेमस फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी एंड मकसूद बुंदू खान इज़ नॉट लेस देन एनीवन। अच्छा भाई, मकसूद भाई को आप मेरे चैनल पे दिल्ली और कराची की कोलैब के अंदर देख चुके हैं, और अब टर्की कराची की कोलैब के अंदर भी मकसूद भाई आप माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़रूर, ये तुर्की और पाकिस्तान तो वैसे भी भाई भाई हैं। सही बात और है। इंशाल्लाह अल्लाह ने कहा तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो तुर्की या दुबई इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अशफाक की जो वीडियो है वो TRT के चैनल के ऊपर होगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे और भी वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने उनके साथ कोलैब किया है। ये सिर्फ आपके एक दिखाने के लिए, आप लोगों के लिए मैंने कहा कि एक बिहाइंड द सीन टाइप की वीडियो शेयर कर दूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।